Good morning, children. We have completed our first lesson in previous class. So today I am going to explain you there is such a wonderful, cute and sweet poem named Squirrel. The Squirrel. This poem is written by Mildred Bowers Armstrong. In this poem, there is such a wonderful squirrel. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut around your house. In this poem, the poet and her friends were playing in their garden and suddenly they saw a squirrel. So she describes about that squirrel in this poem. So please concentrate here. First I will read this poem and then explain you. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. यहाँ पे पोएट ने एक गिलहरी की बात की है बच्चों. So here he stands for a squirrel. Here you can see this word he. He stands for a squirrel. Dear students, usually we used it for any animals or non-living things. But here the poet used he for squirrel because यहाँ पे personification use हुआ है. When we use personification means we give human quality to any animals. So here he stands for squirrel. The poet explains he wore a question mark for tail. Here you can see in this picture, students, the tail of the squirrel is like a question mark. So here the poet said the squirrel wore a question mark for tail because its tail is curved at the tip and overcoat of grey. Usually squirrels are grey and red in color. So the poet says the squirrel wore an overcoat of grey color. He sat up straight to eat a nut. We all know that the squirrel's favorite food is nut. And usually when squirrel eat nut, squirrel prefers to sit straight at backside. And here also the squirrel sat up straight and eating nuts. He liked to tease and play. Here the squirrel is very innocent and naughty also. So here the poet say that the squirrel liked to tease. उसको चिढ़ाना बहुत पसंद था. Squirrel सबको चिढ़ाती रहती थी. And also he liked to play with persons. और उसको सबके साथ खेलना भी अच्छा लगता था. And if we ran around his tree. And here the poet described that when the poet and her friends both were playing in their garden, suddenly they saw a squirrel. And when they ran around the tree, he went the other way. The squirrel, what did the squirrel do? The squirrel suddenly changed her direction and went to opposite direction. So in this way the squirrel liked to tease and play.
यहाँ पे जो गिलहरी है बच्चों, उसको चिढ़ाना और खेलना बहुत पसंद था। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब भी वो और उनकी फ्रेंड्स स्क्विरल के साथ खेलने के लिए उनके पीछे भागती थी, तो स्क्विरल भी उनको चिढ़ाने के लिए अपनी साइड अपोजिट कर लेती थी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। सो हियर द स्क्विरल इज वेरी नॉटी ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारी एक बहुत सी खूबसूरत पोयम है एंड इट्स ऑल अबाउट अवर पोयम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू the question answers of this poem. So please listen carefully. Good morning children. In previous class I have explained you a poem, A House, a Home. Today I am going to explain you hard words and working with the poem. First we will see hard words of our poem. First one is yard. Students, what is the meaning of yard? Yard means an open place in front or back of a house. आपका जो घर होगा उसके फ्रंट और बैक दोनों में से एक साइड पे जो ओपन स्पेस होती है बच्चों, इट्स कॉल्ड यार्ड. अनदर मीनिंग इज eaves. What is the meaning of eave? Eave is the overhanging edge of roof. आपके घर के ऊपर जो रूफ होगा बच्चों, उसका जो ओवरहैंग एज होगा, we call it eaves. Next word is chimney. Chimney means a tall pipe or structure that carries smoke away from a fire. Another, stucco. What is the meaning of stucco? A fine plaster to cover a wall. आपके घर में जो walls होगी बच्चों, वो walls usually made out of cement and bricks. But when we cover it with a fine plaster, it's called stucco. Next word, unselfish. The meaning of unselfish is without greed for oneself. हम किसी का कोई मतलब के बिना जब काम करते हैं बच्चों, it's called unselfish. Now last word is caring. What is the meaning of caring? You all know. Concerned with looking आफ्टर अदर पीपल. किसी के लिए जब हम चिंता करते हैं, एंग्जायस होते हैं, किसी की वरी करते हैं, किसी के लिए हम कॉन्सर्न रहते हैं, इट्स कॉल्ड केयरिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज ऑफ सेम पोयम वर्किंग विथ द पोयम. नंबर 1, do you agree with what the poet says? Dear, we have discussed our poem, and while discussing, the poet explained us the difference between a home and a house. So here the question is, do you agree what the poet says? पोएट जो बोल रहे हैं, क्या आप उससे एग्री हो? टॉक टू योर पेरेंट्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस. हियर देर आर सम सेंटेंस गिवन हियर एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस. नंबर 1, अ हाउस इज ब्लैंक. नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. So a house is made up of stones, bricks, wood, glass, etc. Here now this sentence is complete sentence. Now second one, it has doors,
it has blank. So now we have to complete this sentence. यहाँ पे the question is it has means जो house होता है बच्चों उसमें क्या क्या होता है? What belongs to house? So it has doors, windows, eaves, floor tiles, chimneys, etc. Number 3. A home is made. Students, our first question was a house is made. Means what was the house is made up of? Now our third question is a home. A home is made by loving and caring parents and children. होम किससे बनता है बच्चों? तो होम जो है फैमिली से बनता है और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो लव होता है, जो केयर होती है, उससे फैमिली बनती है एंड फैमिली से घर बनता है. सो इट्स अ यूनिट ऑफ फैमिली. अ होम इज अ यूनिट ऑफ फैमिली एंड इट्स मेंबर्स. Now number 4. It has blank. Now our second question was a house has means जो हाउस होता है उसमें क्या होता है? मीन्स हाउस किससे बनता है? नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज जो होम होता है तो होम किससे बनता है बच्चों? इट हैज होम में क्या होता है? सो इट हैज ब्रदर्स and sisters, fathers and mothers dealing with one another selflessly. जब बच्चे पेरेंट्स एक दूसरे से सेल्फलेसली वर्क करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड अ होम. तो होम में ये सब होता है बच्चों. नाउ our second question is now complete this sentence about your house and home. अभी जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो हमें हमारे जो हाउस और होम से रिलेटेड है उससे ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. नंबर 1 माय हाउस इज. तो आपका जो घर होता है बच्चों या तो फिर मेरा मीन्स हमारा जो घर होता है वो फिर आगे हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस. सो हियर आंसर इज माय हाउस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स एंड टाइल्स. इट हैज विंडोज एंड डोर्स मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. वुड और ग्लास से बनी हुई विंडोज होती है एंड डोर्स होता है. सो माय हाउस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स एंड टाइल्स. इट हैज विंडोज एंड डोर्स मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. नंबर 2 द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज. तो हमारे होम के लिए जो बेस्ट थिंग होती है उससे हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है बच्चों. द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर लविंग एंड केयरिंग. दे वर्क सेल्फलेसली and share their joys and sorrows. I discussed you while I explained you this poem. Whenever we become very happy or whenever we became very sad, we go with our parents, with our siblings to share our feelings with them. So my house has members and they are very loving and caring. They work selflessly and share their joys and sorrows. They are
They care a lot for one another. So, this is all about our second poem's exercise. You have to write down these exercise in your notebook with proper handwriting. Have a good day. Thank you.